हेलो एवरीवन। आज हम सब 1981 का जो वॉरेन बफे का लेटर था अपने शेयर होल्डर्स के लिए उसमें गो थ्रू करेंगे। एज यूजुअल हम मेन मेन पॉइंट्स देखेंगे एंड विल ट्राई टू समराइज एंड एक्सप्लेन की पॉइंट्स फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो द फर्स्ट लाइक की पॉइंट जो सबसे पूरे लेटर की थीम है जो वॉरेन बफे ने बताई है इसमें, वही लाइक गुड मनी शुड नॉट बी थ्रोन आफ्टर बैड। तो ये आपने और भी कई जगह सुना होगा एंड जो मेरे को जो मुझे याद आया सबसे बड़ा एग्जांपल जब आदित्य बिरला जी ने वोडाफोन के लिए बोला था, वोडाफोन आइडिया के लिए, दैट गुड मनी शुड नॉट बी थ्रोन आफ्टर द बैड वंस। जब उन्होंने कहा था कि अगर गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगी तो मैं जाकर खुद से और पैसे नहीं लगाऊंगा सडनली, जो उन पे जितना भी गवर्नमेंट वाज आस्किंग like around 1 lakh crore of the amount was total outstandings, including the debt holders and government की जो liabilities थी। तो ये कि मैं इतना पैसा नहीं लगाऊंगा एंड वोडाफोन पीएलसी ने इवन अपना जो वोडाफोन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में था वो राइट ऑफ भी कर दिया था। तो वॉरेन बफेट सेड इट इन द कंटेक्स्ट उनके जो बिजनेसेस अच्छा नहीं कर रहे थे, जैसे कि उनका जो टेक्सटाइल का बिजनेस है वो अच्छा नहीं कर रहा है। ही सेड कि गुड मनी शुड नॉट बी थ्रोन आफ्टर द बैड। तो क्योंकि इवन अगर आपका कोई भी ऐसा शेयर भी है जो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है और आपको लग रहा है कि मैं और एवरेजिंग करता जाऊं और एवरेजिंग करता रहूं जिससे शायद मुझे मेरा एवरेज प्राइस नीचे आ जाए, तो हमेशा याद रखिएगा गुड मनी शुड नॉट बी थ्रोन आफ्टर द बैड। नाउ आफ्टर दैट व्हाट ही टेल्स लाइक सेज कि जहाँ पे दो तरह के बिजनेसेस हैं जहाँ पे उन्होंने पैसा लगाया and he made a lot of money there and like dazzling returns जिसमें बर्कशायर हैथवे को मिले। Which are those two businesses, two kind of businesses? एक business वो है जो वो कहते हैं कि प्राइस इंक्रीज बहुत इजीली कर सकता है, राइट? तो प्राइस इंक्रीज जो इजीली कर सकता है, दे दोज बिजनेसेस आर लाइक कि उनको फर्क नहीं पड़ता। आई वुड जैसे कि लाइक एप्पल, हर 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 बार आता है एप्पल के फोन एंड दे कीप ऑन इंक्रीजिंग द प्राइस। नया वर्जन आता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। द न्यू वर्जन कम्स, स्टिल पीपल यूजेस इट एंड खुशी खुशी लोग जाते हैं, so they can increase the price very easily. वन मोर एग्जांपल आप इसका देख सकते हैं जो आई बिलीव, मुझे नहीं पता, अगर किसी आप इफ यू गेट सम टाइम, just Nestle is listed in India from like so many years, and if you see the Maggie का आप जब देखोगे तो मैगी का देखना, मैगी हैज लाइक वॉल्यूम वाइज कितने उन्होंने वॉल्यूम मैगी का टोटल बेचा, लेकिन ओवर द इयर्स मैगी का प्राइसेस या तो इंक्रीज हुए हैं या फिर उन्होंने अपनी क्वांटिटी घटा दी है। फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैगी यूज्ड टू बी ऑफ 10 रुपीज, बट वो 10 रुपीज में कितना आपको मैगी पहले मिल रही थी, कितना मैगी आज के टाइम में मिलती है, अब तो पैकेट ही 14 का कर दिया आई बिलीव उन्होंने। So that has so Maggie has passed on price increase very smartly. But I believe अगर नेस्ले की एनुअल रिपोर्ट में लिखा है कि अ, कितना वॉल्यूम उन्होंने किया, और आप ईयर ऑन ईयर देखना, फ्रॉम लास्ट आई बिलीव बीएससी और एनएससी में लास्ट आपको 20-25 ईयर्स का तो उनकी एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगी इजीली। इन 20-25 ईयर्स में दे वुड हैव, आई डोंट थिंक दे वुड हैव एवर बीट डिक्रीज इन द वॉल्यूम जस्ट बिकॉज कि उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया है, मैगी की क्वांटिटी घटा दी है, डिक्रीज नहीं हुआ होगा वॉल्यूम में, राइट? So this is how these are the kind of businesses he is talking about, and it's like very an eye opener for you. When he invested, Warren Buffett used to have a business, still they have a business which is See's Candy. It's like they make candies, and it is said that when there was an inflation, actually this whole letters like 1981, now we are talking, this was a period of high inflation in US. So in a particular year what Warren Buffett did, कि जितना इन्फ्लेशन था उसका डबल उन्होंने अपना प्राइसेस बढ़ा दिया सीज कैंडी का, स्टिल द वॉल्यूम डिडंट ड्रॉप, द वॉल्यूम डिडंट ड्रॉप, even the volume increased by 2%, right? So the real GDP growth in that particular state was around 4 to 5%. So they grew less than the GDP, but still, you see,
he increased the price more than twice of the inflation. Still the volume grew. So those are the kind of businesses he is talking about, right? One more example that is there is like when he invested in Coke, it's like 1978 approximately. He invested in Coke, and he checked the previous history of the Coke, like last 50, 60 years or 70 years of history. He checked the Coke, and he saw why he invested. He said 25% of his total company's net worth he invested in Coke. The reason behind that was he said not even in a single year Coke's volume got dropped. This was the brand which Coke was carrying, and Coke was able to expand to any region without much of the efforts. They went to approximately all the countries in the world. There are only two countries in the world. One of them is North Korea. Second one, I'm not able to recall the name, where Coke is not present. Apart from that, every country there's a Coke you can find, right? So Coke had expanded so rapidly, and he put just 25% of his total company's net worth there. It has given him tremendous return. Coke has given over the years. So these are the kind of businesses he's talking about. So if you also find any time such business, maybe you can come if you're watching this video. You can come and comment. Maybe we all can make money there, right? So those are the kind of businesses you should look into. Then the second kind of businesses Raven is talking about is businesses which can increase the revenue without much capital needed. Which can be those kind of businesses? In my mind, those businesses can be like Facebook. Facebook is one of that kind of business, right? Twitter is one of that kind of business. It doesn't matter 1,000 people use Facebook or 100,000 people use Facebook, but Facebook capital expenditure here. Like if Facebook go to a new factory, they don't have to set up a new factory. You know, like if they 1,000 more people join, or 100,000 more people join, or a million more people join, right? They have very limited capex related to the number of people who are joining. And Facebook, the number of people, the more number of ads they can run, right? And even they can have pricey ads if there are more number of people on the platform, right? So those of the kind of businesses in India, you can maybe the business like the- which are in my mind like the platform businesses. You have IRCTC, you have IEX, those kind of businesses. You have ANSE, you have BSE kind of businesses. You have CDSL, those kind of businesses. You have CAMS, the kind of businesses. So those are the kind of businesses which don't need much capital um, uh, to grow, like right. Then, as already talked about, the first kind of businesses, they come inflation-proof businesses, right? And most of Buffett said we are ready to pay a higher price for those businesses. Like for Seas Candy, when he bought, he said he paid 3x of the book price, right? So normally, in a normal scenario, he may not have bought this or नहीं खरीदा होता Seas Candy का business, but that because the kind of business it was, he bought, right? The next thing is like he says, P ratio is easiest one to find for a stock. जब भी किसी को कोई स्टॉक है जिसको कुछ भी नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में उसको भी पी पता है, राइट? द गुड थिंग एंड द बैड थिंग अबाउट द पी इज जिसको कुछ नहीं पता उसको भी पी पता है, करके। तो इट इज लाइक पी ठीक है आपको पता है, लेकिन पी हाउ द पी कम्स, राइट? पी कम्स आपके इन्फ्लेशन से है, क्योंकि आप जब अपने डीसीएफ में वैल्यूएशन करते टाइम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते टाइम जैसे भी आप करोगे, आप इंटरेस्ट रेट डालोगे तो इंटरेस्ट रेट्स विल affect the PE. The lower the interest rate, the higher the PE. The higher the interest rate, the lower the PE. Right? So इसलिए this letter was written when already it is as I told, and there are high interest rates in US. So what he wanted to say, Mr. Buffett wanted to say कि करंटली हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं तो पी कम होने चाहिए। लोग अभी भी पिछले पी से कंपेयर कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं हिस्टोरिकल पी कम पर चल रहा है। HDFC बैंक इज ट्रेडिंग लोवेस्ट पी, लोवेस्ट प्राइस टू बुक। So those kind of things should be avoided. Those kind of things should be avoided.
For some investors are too much concerned about the dividends, but it's not the dividend. It's about from where the dividends are coming from. So in the case of some companies, right, like in case of Vedanta, they gave a huge dividend. They take debt and then they give dividends to the parent company, right? Which is not correct. That's a different thing. The share price is rising. He said even some company, what they do is they issue shares, right? They issue additional shares and then they pay dividends to the shareholders. This is like absolutely not correct, right? It's like आपके पास अगर कैश है सारे काम करने के बाद जो आपके पास कैश बच गया है और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूं तो आप डिविडेंड दे सकते हो अदरवाइज डिविडेंड नहीं देना है एंड even it's better to buy your own shares rather than giving dividend because of the capital जो आपके गेन टैक्सेस हैं उनके लिए इन इंडिया करंटली लाइक डिविडेंड्स पे हमारा टू और ट्वाइस डिविडेंड्स आर टैक्स एक तो आपके नेट प्रॉफिट्स के बाद में और देन जो भी आप डिविडेंड रिसीव करोगे सो इट्स बेटर कि कंपनी बाय बैक कर ले rather than paying dividends. So these are the key points that Mr. Buffett discussed. So always remember the things. Don't throw good money after bad. इन्फ्लेशन प्रूफ बिजनेसेस अगर आपको कहीं मिल रहे हैं ऐसे बिजनेसेस तो आप उनके लिए ज्यादा पे करोगे तब भी चलेगा राइट इन्फ्लेशन प्रूफ बिजनेसेस जो बहुत इजीली अपना प्राइस बढ़ा सकते हैं राइट सेकंड बिजनेसेस जिनमें बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए बिजनेस ग्रो करने के लिए दोज काइंड ऑफ बिजनेसेस कैन आल्सो गिव यू गुड रिटर्न्स इट डजंट मीन जो मैंने जो भी स्टॉक बताए आप जाके बाय कर लें always look what's the available opportunity also for those kind of businesses, right? And obviously valuation. Now, I'm not very sure. Like BSE का stock maybe 50, 60 के भी ऊपर तो हो गया NSE not listed. And then CDS and all those kind of stocks, I haven't seen them in recently. So, but जो भी मैंने बोल रहे हैं वो जाके आंख बंद करके बाय नहीं करना बट आई एम जस्ट समराइजिंग पीई अगर आप देख रहे हो नेक्स्ट पॉइंट इज पीई अगर आप देख रहे हो तो प्लीज देखो कि अगर आप हिस्टोरिकल पी से कंपेयर करो तो हिस्टोरिकल इंटरेस्ट रेट्स भी देखो राइट अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो पी कम होगी इंटरेस्ट रेट कम है तो पी ज्यादा होगी ऑब्वियस सी बात है वो लास्ट में डिविडेंड के लिए कंपनीज मत खरीदो और अगर आप खरीद रहे हो तो देख लो कि डिविडेंड कहाँ से आ रही है राइट so these are the key points we have summarized see you in the next letter that will be like our 1982 thank you thanks a lot